पंतप्रधान मोदी आणि भाजप नेत्यांकडून बऱ्याचदा काँग्रेसवर टीका करताना जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या धोरणांबद्दल टीका केली जाते। पण आता मोदींचं नेतृत्व नेहरू आणि इंदिरा गांधींइतकं सक्षम नसून अमेरिकेपुढे मोदी लोटांगण घालतायत अशी टीका विरोधकांनी सुरू केली आहे। याचे पडसाद देशाच्या संसदेत देखील उमटले आहेत। ज्या विषयावरून मोदींना कमकुवत पोर्ट्रे करण्याचा प्रयत्न झाला तो विषय होता ऑपरेशन सिंदूर आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची त्यातली मध्यस्थी। पाहूयात। संसदेचं अधिवेशन सुरू झालं आणि विरोधकांनी पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर वरून सरकारला घेरलं। संसदेत विरोधकांनी या मुद्द्यावरून आंदोलन देखील केलं। पण आता विरोधकांनी ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावरून पुन्हा एकदा मोदींवर टीका केली आहे। यापूर्वी ट्रम्प यांनी आपल्या बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे बऱ्याचदा या विषयाबाबत संभ्रम निर्माण केला। आपल्या मध्यस्थीनेच भारत पाक युद्ध थांबलं असं म्हणत नोबेल पुरस्काराची स्वप्नही ट्रम्प यांनी बघितली होती। Everyone thinks so, but I would never say it. You know what I want to do? I want to get it finished. The prize I want is victory for the world, not for even here. I want victory for the world, because that's what we're talking about. इतकंच काय तर भारत पाकिस्तान युद्ध थांबल्याची घोषणा भारत पाकनं करण्याआधीच ती ट्रम्प यांनी केली आणि युद्धबंदीचं श्रेयही स्वतः घेतलं। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. नेमकं याच मुद्द्यावरून मोदींच्या नेतृत्वावर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय। अमेरिकेच्या दबावामुळे ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीमुळे भारताने ऑपरेशन सिंदूर गुंडाळलं असा आरोप विरोधकांनी केला। इंदिरा गांधींच्या तुलनेत अगदी 50% जरी हिम्मत असेल तर मोदींनी ट्रम्प खोटं बोलतायत हे सांगावं असं आव्हान राहुल गांधींनी दिलं। 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here. Let him say here. दावा किया और विदेश मंत्री कह रहे कान खोल के सुन लो, कोई भी बात नहीं हुई है 22 अप्रैल और 16 जून के बीच में। प्रधानमंत्री जिन शब्दों से प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा है, उन शब्दों को आप अगर ध्यान से सुने तो एक गोलमोल शब्द है। डायरेक्टली कहें, राहुल जी ने कल भी कहा, डायरेक्टली कहें कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो झूठ बोल रहे हैं, कहें सदन में। तर विरोधकांच्या या आरोपानंतर मोदींनी तब्बल 2 तास संसदेला ऑपरेशन सिंदूर बाबत संबोधित केलं आणि विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली आणि कोणत्याही देशाच्या मध्यस्थीमुळे आपण युद्ध थांबवलं नाही असं स्पष्टीकरण मोदींनी दिलं। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा।
तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। मोदींनी संसदेत 2 तास या मुद्द्यावरून भाषण केलं, पण ना त्यांनी ट्रम्प यांचं नाव घेतलं ना अमेरिकेचा उल्लेख केला। पण यावरून विरोधक मोदींच्या परराष्ट्र नीतीवर आणि भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतायत। विपक्ष ने और खास करके अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आज तक 26 बार कहा। हमने डोनाल्ड ट्रंप की बात की, अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात की, न कि उपराष्ट्रपति की बात की। यही तो खासियत है उनकी भटकाने की। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं लिया, न कहा कि प्रेसिडेंट ने कभी ऐसा काम किया है। उनका जो बात करने का तरीका था, हम अपेक्षा कर रहे थे कि वो इनकार करे कि मैंने प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी है। एक बार भी नहीं कहा। अर्थात यामागे ट्रम्प यांना न दुखावण्याचा भारताचा हेतू असल्याचं स्पष्ट आहे। तरीही परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर दिलंय। उनको कहना चाहता हूं, वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। पण एकीकडे ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीवरून आरोपांची राळ उठलेली असताना ट्रम्प मात्र परत तीच विधानं करून पंतप्रधान मोदींना अडचणीत आणतायत। That they are going to pay 25%. That India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, India's they're my friends, and he's my friend. And, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. We did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia and blah, blah, blah. So, that was a great one. I think that's been pretty well finalized now, right? वास्तविक अशी विधानं करून ट्रम्प यांनी यापूर्वी अनेकदा पलटी सुद्धा मारली आहे। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. मध्यस्थीबाबत वक्तव्य केल्यानंतर आपण मध्यस्थी केली नसल्याचंही ट्रम्प यांनी नंतर कबूल केलं। पण तरीही ते मध्यस्थीचा पुनरुच्चार करण्याचा खोडसाळपणा सोडत नाहीयेत। पण यामुळे कोंडी होते ती केंद्र सरकारची, म्हणजेच पर्यायाने पंतप्रधान मोदींची, ज्यावरून मोदींना कमकुवत दाखवण्याची एकही संधी विरोधक सोडताना दिसत नाहीये। ब्युरो रिपोर्ट, जय महाराष्ट्र, मुंबई।